guys, I'm Pooja and I welcome you all to today's video. So we all know अभी कुछ दिन पहले ही Nykaa Pink Friday sale थी and I saw so many people going completely crazy. While I this time decided to hold my horses and not buy too much, but I still got something. So I would like to put it in a way कि मेरा I think वो वाला ना phase चला गया है when I look at something on sale and I really want to get every single product, चाहे वो मैं use करूँ या नहीं करूँ या मुझे चाहिए हो या नहीं चाहिए हो. So I think thankfully that stage of my life is in the past. So I got a few things, not a lot, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे एक्चुअल में चाहिए थी या तो ख़त्म हो गई थी या मुझे नहीं ट्राई करनी थी, बट समथिंग वेरी वेरी बेसिक एंड आई थिंक इट्स मोर ऑफ स्किन केयर. आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू गाइज. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या लिया है. दीज आर द फ्यू पैकेजेस एंड श्योर यू कि सिर्फ ये देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है. इट्स नॉट टू मच बट आई एम श्योर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम सबको एक्चुअली सेल में से पिक करनी चाहिए. Like the normal things that you use, lotions, creams, moisturizer, face mask and things like that. So let's get started. मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ सबसे बड़े वाले डब्बे से जो सबसे एक्चुअली पहले आया था. एंड आई अप्रिशिएट कि नायका का सारा सामान बहुत जल्दी जल्दी आ गया. एंड फर्स्टली ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, दो आई विश कि मुझे किसी दिन नायका पे एंडलेस शॉपिंग के लिए क्रेडिट्स मिल जाए, बट ऐसा नहीं है. सो आई ऑर्डर्ड दिस विद माई ओन मनी एंड ये सब सामान बहुत जल्दी जल्दी आ गया. बट आई विश कि सब सामान इकट्ठा आता जिससे कि थोड़ा सा वेस्ट कम क्रिएट होता. Anyhow, so this is the package and of course I have already started using it. मतलब मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं वीडियो शूट करने से पहले ना यूज़ करूँ, but I have already started using it. And okay, let's get started. The first thing is this Schwarzkopf serum, and I love using Schwarzkopf products. I have been using their shampoos and conditioners for years now. I always go to Schwarzkopf salons for my hair colors because they have the best hair color. So हर वीडियो में मेरा एक बार तो फोन रिंग होता ही है. Anyhow, so I decided to try out their interesting and ये मुझे एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज अगर आप देखें तो ये 2 कलर का है एंड ये एक्चुअली सिरम भी 2 कलर का है. मैं भी आपको दिखाऊंगी. सो दिस वन इज कॉल्ड रिपेयर रेस्क्यू न्यूट्री शील्ड सिरम फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड इसका प्राइस वैसे 500 रुपये, बट मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगी कि मुझे कितने का मिला. ऑफ कोर्स इट वाज इन ऑफर एंड इट हैज़ अ रियली नाइस पंप एंड लेट मी शो यू हाउ इट कम्स इन 2 डिफरेंट कलर्स. सो देखिए ये 2 डिफरेंट कलर्स का ही आता है. यू जस्ट हैव लाइक मिक्स इट एंड अप्लाई इट. सो फार आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर आई थिंक 2 वीक्स, 1 हफ्ता 2 हफ्ता. इट्स प्रीटी गुड. सो बहुत टाइम से मुझे एक सीरम चाहिए था बट मैं डिले करती जा रही थी फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन. सो अब मैंने डिसाइड किया है कि आई विल spend my money on things that I actually need rather than spending it on like too much fashion things or too much makeup because ये चीज़ तो हम रोज यूज करते हैं. So yeah, that is one thing. Next I got this simple skincare micellar cleaning water and I would just say that this is one of the best brands out there and it is so underrated. मतलब मैं देख ही नहीं रही हूँ कोई भी YouTube पे कहीं भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा है इस ब्रांड के बारे में. I don't know why but it is an amazing brand and it really is just simple and pure and because it is simple and pure इसका कॉस्ट भी बहुत कम है जो जनरली होता नहीं है. आज अगर मैं कोई प्योर चीज़ खाना चाहूँ, लेट्स से इफ आई वांट टू ईट अ सैलेड, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है जबकि उसका कॉस्ट कम होना चाहिए. एंड सेम विद स्किन केयर, अगर आप सल्फेट फ्री जाओ फॉर शैम्पूज एंड कंडीशनर्स या फिर आप फ्रेग्रेंस फ्री जाओ फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, देन इट्स वेरी एक्सपेंसिव. बट दिस ब्रांड इज वेरी नाइस. इट्स एक्चुअली फ्रेग्रेंस फ्री, आई थिंक इट इज अल्कोहल फ्री, नो color, no harsh chemicals and it is very inexpensive. I think ये मुझे कुछ 100-150 रुपये का मिला था. As you can see I've already used it quite a lot. मैंने actually एक रील भी डाली है Instagram पे using this product where आप जाकर देख सकते हो कि कितना अच्छा वर्क कर रहा है ये. My Instagram handle is poojamittal09. So अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए and I actually post a lot there. Anyhow, so this is an amazing product. आपका मेकअप अच्छे से निकाल देता है. I actually just use it at times to splash my face, not splash my face but I use it on a cotton ball and just wipe my face and it
feels really nice. So that is the second product. Then I got another skincare product. बहुत टाइम से मैं वाव का कुछ ट्राई करना चाह रही थी, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं इट्स रियली नाइस. बहुत सारे मेरी कम्युनिटी के जो फ्रेंड्स है वो भी कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट्स आर रियली नाइस. एंड हम सबको पता है विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर स्किन. सो आई थॉट आई ट्राई द विटामिन सी क्ले फेस मास्क, and it comes in a package like this. I have already applied it once and I will have to say कि मुझे थोड़ा सा ब्राइटनिंग लगा, बट अभी एक बार यूज़ करने के बाद अपने थॉट्स देना बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं होगा. सो आई विल होल्ड माई हॉर्सेस हियर ऑल्सो. और मैं कुछ दिन बाद लेट्स से मे बी आई मेक अ ट्राई ट्यूजडे और मे बी अ रील with this one. I think I'll do a reel showing how it works and my thoughts on the same. So please मुझे Instagram में follow कीजिए. आप मुझे Facebook, Twitter पे भी follow कर सकते हैं, but Instagram में मैं सबसे ज़्यादा available होती हूँ. So if you want to ask me anything, if you want to be in touch, or if you want regular content from me, follow me on Instagram. So this is something actually मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है. The only thing which is a little disappointing is कि ये डब्बा इतना बड़ा है, बट इसके अंदर से प्रोडक्ट जो निकलता है ना वो इतना ही निकलता है. सो इतना इसके नीचे प्लेटफॉर्म लगा हुआ है. एनी हाउ ये भी कम नहीं है, एंड आई थिंक प्राइस भी इसका ठीक था. इस पे 599 लिखा है. आई थिंक मुझे कुछ 400 समथिंग का मिला था, नॉट श्योर. But as you can see, this is open and this is how the product looks like. So that is that, and it also comes with this this silicone brush, which actually मैंने पहली बार यूज़ किया. हर बार I just toss it out. I don't know why, but this time I used it and it actually works very well to apply a face mask. So इसका आप रिव्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप रील एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Before moving on, I want to show you that I got this very generous size sample while I purchased this. This is the mask which I purchased, and this is the aloe vera gel, and I really appreciate them sending this to me. I have just used it once because I ran out of my green leaf one, so मैं अभी ये नहीं बोल पाऊंगी कि अच्छा है या नहीं है, but it is 99% aloe vera gel, which is really exciting, and it does not have any color, which is amazing as well. So really happy that I got this. Discount भी मिला, sample भी मिला, और क्या चाहिए मुझे. Next, I decided to actually order something जो मैं बहुत पहले यूज़ करती थी, which is an eyeliner by Maybelline. So this is called Maybelline's Colossal Bold Eyeliner, and ये सेल पे था. एंड आई रिमेंबर कि मुझे पहले काफ़ी अच्छा लगता था. एंड जनरली आई यूज़ द शुगर कॉस्मेटिक्स eyeliner, which is fabulous, बट मैं बहुत टाइम से वही यूज़ कर रही हूँ. एंड आई एम समबडी आई लाइक टू change things up and switch things up. So I thought कि वो तो है ही, but let me just try this one, and if it works then it is amazing because इसका cost उससे काफ़ी कम है. So I've not used this up, but I am pretty hopeful. Next, I have another liner because I am on a liner kick. No, I am not that wasteful. I have another liner because I have to gift it to somebody. For now, this one is Black Liquor by Superliner. It is waterproof and it is by Maybelline. I've heard really good things about this one as well. So let's see ये कैसा जाता है. I think मैंने इसको एक बार लगाया था and it worked okay. So अभी बहुत जल्दी होगी बोलना, but I got another black liner because I think गिफ्टिंग के लिए बेस्ट है. हर किसी को लाइनर पसंद होता ही है. So yeah, that is that. Then I also got my concealer. So I absolutely love using LA Girl concealer, Maybelline, this age rewind one, or I absolutely love the high-end concealers like Bobbi Brown and NARS. So these days I'm using NARS and it is working amazingly, but भाई इतना महंगा है कि अगर मैं उसको every single time यूज़ करने लगूंगी तो मुझे बस मैं कंसीलर ही खरीदती रह जाऊंगी. So I thought I will just repurchase this one. ये मेरा बहुत टाइम से ख़त्म हुआ था. I was just putting off buying it. So जैसा कि मैंने कहा कि इस बार मैंने वो चीज़ें ली हैं जो मुझे एक्चुअली बहुत टाइम से चाहिए थी, बट मैं पैसे उन पर डाल नहीं रही थी. सो दिस इज़ द कलर, और मुझे ये भी नहीं याद आ रहा कि मैं पहले किस कलर में लेती थी. सो लेट्स होप कि ये कलर सही हो. ये है, इट is what is it called? It is in the color Neutralizer, which is 150. So I'm hoping it's going to be good. And अगर आपने कभी ये concealer use नहीं किया है, so you must. It is very easy to use. It has medium coverage. It stays in place, especially in a place like Delhi जहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है, या फिर बहुत मॉइस्ट हो जाता है, या बहुत सर्दी हो जाती है. ये हर सीजन में
work करता है. So that is amazing. I stocked up on this. Next I also got this brown eyeliner. So जब Wet n Wild India में launch हुआ था, they had sent me a very big PR package and उसमें ये eyeliner था, and that time I was not into eyeliners, but I started using this one. It's called H2O waterproof eyeliner and I have gotten the color dark brown. अगर आपने मेरे कुछ पुराने tutorials देखे होंगे तो उसमें शायद आपने देखा भी होगा that I use a lot of this eyeliner. बेस्ट चीज़ इसके बारे में ये है कि इसका जो ब्रश है ना वो बहुत पतला है. सो इफ़ यू जस्ट वांट अ लिटिल फ्लेक और इफ़ यू जस्ट वांट वो कई बार होता है ना, यू जस्ट वांट दैट मस्कारा लुक बट यू वांट योर आईलैशेस टू लुक अ लिटिल थिकर, दैट्स व्हाट इट डज. सो आप बहुत पतला सा एक लाइन लगा लीजिए ऊपर और वो ऐसा लगता है कि आईलैशेस बहुत हैवी एंड थिक है. सो दैट इज़ व्हाट इट डज एंड आई यूज दिस अ लॉट. अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है बट मैं हमेशा इसको ट्रैवलिंग में साथ लेके जाती हूँ, तो इसका जो वॉन्ड है ना वो काइंड ऑफ ट्विस्ट हो गया है, मतलब टेढ़ा होकर टूट गया है काइंड ऑफ मुझसे. सो आई जस्ट हैड टू रीस्टॉक इट. सो आई गॉट दिस. नाउ दिस वाज आल्सो वेरी इनएक्सपेंसिव. आई थिंक ये 150 रुपये का कुछ था. आई एम नॉट श्योर. सो आई विल बी शोइंग ऑल द प्राइजेस, रियल प्राइजेस एंड द प्राइस ऑन विच आई गॉट इट राइट हियर. ओके, तो पहला डब्बा हो गया है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. नाउ दिस इज द स्मॉल वन. ओके, इसमें सारे लगे रखे हैं. And I just have two products. I got this thing, Maybelline Fit Me concealer. So मैं Maybelline का हमेशा वो anti age rewind concealer यूज़ करती हूँ, but मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि this Fit Me concealer is amazing. So मैंने ये सोच के लिया है concealer कि अगर ये इतना अच्छा है then I can just you know at time when you're just going out ऐसे ही घूमने टाइप्स आप फाउंडेशन स्किप करके ये लगा सकते हैं. सो लेट्स सी. आई रियली होप इट इज़ गुड. मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है मेरे लिए बट लेट्स होप इट वर्क्स आउट फॉर मी एंड इफ इट डज देन आई विल लेट यू गाइज नो. And the last product for the second box, and I think उसके पास just एक box है वो Nykaa Lux वाला. Anyhow, so ये है ये mascara. I have seen everybody and their mothers and their dogs and their padosis talking about this mascara. And if you know me, then you know that mascara is everything for me. Like I love me a good mascara. So I got this one. It is L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise and apparently it gives you amazing lashes. मुझे थोड़ी vibes दे रहा है better than sex mascara की, which I used to use and it is amazing, but then I thought कि इतना पैसा मस्कारा में क्यों खर्चा जाए. वो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था and I really loved it, but I never ended up repurchasing it. I use a MAC mascara which works amazingly, but again I like to try new products, so I just got this. Next is this Nykaa Lux का डब्बा. This is my first time shopping luxury products from Nykaa online. मैंने एक बार से वाली Huda Beauty palette लिया, but that I went to the store. I was in Pune and I went to the store and I got it. Anyhow, so ये रहा. I had to get something because wow, मेरा फ़ोन बजना बंद नहीं होगा हर वीडियो में. It's gonna ring. Anyhow, so my mom actually needed some foundation and I saw that MAC is having an amazing offer wherein you shop for like 2,500 and you get a full size product free, and that's exactly what I did. So इतना सारा paper, I don't know क्यों. Anyhow, so I got this foundation. I use it MAC Studio Fix. I got it in NC35 because my mom is a little fairer as compared to me. I wear NC37. This was around 2,700. Let me just show you the bottle if you're curious. So ये रही bottle. I got it in इसका आया था. And इसके साथ उन्होंने मुझे choice दिया between a lip color and some mascara, and I already told you I love mascara. And lip color मतलब वो बड़े वो थे, मतलब बहुत dark and मुझे नहीं चाहिए था. मतलब I am a nude lip kind of a person. So I skipped on that and I got myself this mascara. It's called Extended Play Bring Me Up Lash Mascara, and I think it is a waterproof one. It is extra voluminizing. Voluminizing? Is it a word? Yeah. So let's hope this works. There's two mascara ho gaye, so I'm going to open one up first and then the other one later, because if you do not know, then mascaras generally I can't speak today. Mascaras generally dry up from 3 to 6 months, so do not open 2-3 mascaras at the same time. Yeah. That is that, and they gave me a very like tiny sa, chota sa, tiddy sa Fix Plus also, which is this. It is so cute. I think I can just take it
ऑन द ट्रैवल्स, बट यूज़ करने का मन ही नहीं करेगा, इतना क्यूट छोटा सा है. एनी हाउ, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ लक्स, सो दे गेव मी द थिंग सेइंग थैंक यू फॉर परचेजिंग. सो दैट इज़ माई नायका हॉल. आई नो बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे, बट आई एम श्योर आपने पैटर्न देखा होगा. मैंने सिर्फ वो चीज़ें ली हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी, जो मेरे कलेक्शन में तो ख़त्म हो रही थी या मिसिंग थी, या मैंने लिया है स्किन केयर. बिकॉज गाइज आफ्टर डूइंग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फॉर लाइक 6 years एंड आफ्टर लाइक loving makeup for my entire life, I've realized that सबसे important चीज़ है आपकी स्किन. प्लीज़ अपनी स्किन की केयर कीजिए, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, एंड मेकअप तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा फिर. सो दैट इज़ ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसे वीडियोस अच्छे लगेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे मैंने आज किया, स्किन केयर, ब्यूटी, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, लीव अ कमेंट बिलो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि शायद एक अच्छा गिव अवे भी हो सकता है. सो या, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.